हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लगते जिगरो, कैसे हो सब लोग? बहुत बहुत मजे में हो गए। भगवान गणपति पधार चुके हैं और हम उनकी प्रार्थना करते हैं बिकॉज गणपति विघ्नों को हरने वाले हैं। ओके, तो उनका आह्वान करते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान जीवन में आए हुए विघ्नों को दूर करें। साथ में संवत्सरी भी है, तो इच्छामि दुक्कड़म। ओके, संस्कृत में एक्चुअली ऐसा है, अहम इच्छामि तव दुख हरम, कि मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन के सभी दुख दूर हों। तो गणपति विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्न दूर होंगे तो डेफिनेटली लाइफ में से दुख दूर ही होंगे। और संवत्सरी हमारे जैन भाइयों का त्यौहार है। एंड इच्छामि दुक्कड़म, अगर हमसे भी अगर कोई किसी के लिए भूल हुई हो, भूल कर भी कोई भूल हुई हो, सो इच्छामि दुक्कड़म। ओके, सो बाय दिस मैसेज नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर साइंस। पहला चैप्टर ऑलमोस्ट बच्चों 2 महीने चला, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 14 टोटल लेक्चर्स जो है उसके कंटिन्यू रहे। उसमें से कुछ 7-8 लेक्चर, आई थिंक सो 10 लेक्चर सुशील सर ने आप लोगों के साथ कंटिन्यू किए। उसके बाद के 8 लेक्चर बराबर मैंने कंटिन्यू किए। सो सच अ लॉन्ग चैप्टर इट वाज, एंड सेम वे दिस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एंड वास्ट टॉपिक है इन योर बायोलॉजी। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट I am going to start, इसका पहला पार्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। एंड इन दिस 2 टॉपिक I am going to take. One is the life process, what is life process, and second what is nutrition. So we will talk about this 2 topic. First is the life process and the second is the nutrition. So first thing is that this entire universe, or you can say the world, it is full of with the 2 components. One factor which is life, living one, okay, and second factor which is non-living, or you can say it is inanimate. Okay, and with this 2 combination, this entire universe or the world is working. Okay, that is the first thing. So what is the basic difference between the living and non-living? So first thing is that living one has the characteristics of growth, while non-living have not that kind of characteristics. If you see any stone 5 years ago, then also it is the same, and after 5 years then also it is the same. But if you see any person before 5 years or after 5 years, definitely some structural change you will observe in that. It indicates that living one has the growth. Second, living one has the movement. They move from one place to another place, but mountains, soil, they are not able to move their own. What is about the plants? Plants are also living one. You will say, sir, they are not moving. Moving characteristics is not there, but their moving is the static movement. स्थिर गति है उनको. They are in one place only, but they move upward against the gravitational force, and they move toward the gravitational force. They are roots. So it shows that there is movement, and that's why plants are also living one. And apart from that, whatever the living one are there, they have to do the different kinds of metabolic activity to survive them, which is not done by the plant. And this makes the difference between this makes the difference between the living one and non-living one. Whatever living one are there, doesn't matter whether it is a plant or a human being, different kinds of metabolic activity they have to do for their survival, and that is not done by the non-living. So that makes difference between living and non-living. So whatever metabolic activity is done by the living one
फॉर देयर सर्वाइवल, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी काम करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ओके, उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सो हियर टोटल 6 लाइफ प्रोसेसेस आर देयर एंड दिस 6 लाइफ प्रोसेस इट मेक द लिविंग बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग बीइंग। यही जो है 6 चीजें किसी लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग से अलग हटके रिप्रेजेंट करती है। सो व्हाट इज फर्स्ट life process is the nutrition, means to intake the food, khana. Okay, and that thing is done by plant and as well as animals or the microorganisms also. Nutrition is the first what's the basic condition for the survival. Okay, and that is done by the living one, and this is the first characteristics or the first feature of life process, that nutrition is essential to survive the living being, because they get energy to do the different kinds of other metabolic work. दूसरे जितने भी काम हैं which has taken place inside the body or the outside the body, that energy they obtain with the help of food, and that food they get through the nutrition, and that is called the poshan. Later on we will discuss this one in very vast way, okay, because it is a part of our topic also. Second is the respiration. Respiration means to breathe. Okay, during the metabolic process different kinds of gases has occurred in our body and it should be released from the body. Okay, especially the carbon dioxide, and to do the different kinds of metabolic activity in the body, especially the digestion of food or the process of food in each and every cell, their function. Okay, so that is taken place with the help of respiration. Okay, next one is the transport and circulation. Whatever the food material, whatever the nutritive materials is produced inside the body, it is carried out each and every cell. That is the transportation. It has taken through the help of blood. Okay. Different organs are associated with the transportation and circulation. And during this process, so many toxic materials are produced in the body and it has released from the body, and that process is called the excretion, utsarjan. Okay. And to do all these things, special nerve system, brain we have, and it controls the whole functions of the body, and that is the control and coordination in different organs like brain, spinal cord, nerves that are work with this. Next, reproduction. This is the biggest characteristics of living one. अपने ही जैसे दूसरे living one को birth देना, that is the reproduction. अपने वंश की वृद्धि के लिए to continue his race, reproduction is very essential process in entire life process. This all we will study step to step in your this chapter. This is your 6th chapter. In 6th chapter we will study till here nutrition, respiration, transport and circulation, and excretion. हम यहाँ तक पढ़ेंगे. Okay, and this too as a separate chapter for this, so we will study it independently. Okay, so let's talk about first nutrition. So nutrition means what? To intake the food to obtain the energy to do the different kinds of work inside the body and outside the body. बाहर शरीर के अंदर के काम करने के लिए और शरीर के बाहर के काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, and energy we obtain with the help of food, वो खाने की मदद से हमको मिलता है, and that entire process is called the nutrition. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. So when we talk about the nutrition, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो during that time one most important component is associated with it, nutrition के साथ में जुड़ी हुई है, and that is
Nutrition is done by plant and as well as the animal, but plants are able to make their own food. Plant अपना खाना खुद बना सकते हैं. Is it possible for human being? Possible है? इंसान के लिए ये बिल्कुल भी possible नहीं है. Okay, and that make difference the mode of nutrition, and that's why it is divided into two parts: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto means self, nutrition means consumption of food, यानी अपना खाना खुद बनाना, स्वयं पोषण. Okay, and that capacity is given by nature to the plant. So what is exactly in the plant which do this kind of activity? So in plant, one green pigment is there, it is called the chlorophyll, and that chlorophyll, with the help of sunlight, okay, in sun rays, one component is there, that is a photon. It converts that photon in food in the form of ATP, that is the adenine triphosphate. उसका फूड में कन्वर्जन करते हैं, and that food is utilized by plant for their growth and development and different internal metabolic activities, and that is called the autotrophic nutrition. Other than plant, some microorganisms, green algae are there, even यूक्लिना करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो भी जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है. हमारे अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी आर नॉट एबल टू डू द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन, सोचो जरा दोस्तों, अगर ये कैपेसिटी हमारे अंदर होती तो शायद मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा नहीं रहा होता, और आप घर पे बैठ के ये वीडियो शायद देखते भी. हम ये जितनी भी दुनिया भर की जद्दोजहद कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस, ये टमी के लिए कर रहे हैं. जब खाना ऐसे ही जो है क्या कहते हैं मिल रहा है बिना कोई एफर्ट्स डाले, देन व्हाई शुड पर्सन डू द एफर्ट्स? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मरुना में सबके दाता राम. Okay, so there is no need to do efforts, and that is the reason this nature, this Almighty, उसने हमारे अंदर ये चीज नहीं रहनी. तो जस्ट इमेजिन करो, आपको भूख लगे और आप मम्मी के पास जाओ और मम्मी को बोलो मम्मी भूख लगी है मुझे, तो there is no need to eat the पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर और any other food. मम्मी क्या करती थी आपको? जाओ बेटा धूप पे खड़े हो जाओ, मजे करो, ऐश करो. ओके, आपको वहीं से जो है पूरा का पूरा जो है न्यूट्रिशन मिल जाना था. अगर आपके अंदर भी अगर क्लोरोफिल होता तो, लेकिन नेचर ने ये नहीं किया, बिकॉज नेचर हमसे कुछ स्पेसिफिक वर्क करवाना चाहती है, एंड दैट इज द रीजन हमको स्पेसिफिक माइंड, स्पेसिफिक थिंकिंग दी है. ओके, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी आर नॉट इंक्लूड इन दिस, वी आर इन अनदर कैटेगरी, एंड दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, हम प्लांट्स के ऊपर और अनदर एनिमल के ऊपर डिपेंड हैं, एंड हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, दैट इज इंक्लूड इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो इंक्लूड होते हैं. ओके, एंड एज पर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइडेड as per its feature: parasite and saprophyte. Parasite I have written here in Hindi. परोपजीवी, दूसरों के ऊपर जिंदा रहने वाले, और वो भी कैसे? जिंदे पे जिंदा रहने वाले. बराबर, परोपजीवी, दूसरों पे जिंदा रहने वाले. हमारे इंटेस्टाइन में एस्केरस या टैपवॉर्म ये हैं, सो दे आर डिपेंड ऑन अस. हम जिंदे के ऊपर जिंदा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ पैरासाइट. बट सर्टेन काइंड्स ऑफ फंगस आर देयर, सर्टेन काइंड्स ऑफ mushrooms are there. Mushroom is one kind of fungus, and that is depend on decay and dead animal.
सड़ी गली चीजों के ऊपर वो पैदा होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी. सो दिस इज आल्सो टू टाइप्स ऑफ heterotype of nutrition, and among heterotype of nutrition its mode is further divided into this four part: carnivorous, herbivorous, omnivorous and holozoic. Okay, I complete this. Before that, let's one more thing is that at autotrophic nutrition के अंदर बच्चों जब प्लांट क्लोरोफिल की मदद से फूड ऑब्टेन करता है, खाना बनाता है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ इस तरीके की केमिकल प्रोसेस होती है. इसके बारे में जब हम लोग डीपली इसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आगे और है, इट इज नॉट कंप्लीटिंग हियर. ये तो न्यूट्रिशन का एक पार्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करके दिया है. उसके बाद में हम लोग प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है एंड हाउ न्यूट्रिशन इज टेकन प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, ये दो अलग अलग पार्ट हैं. वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, बट बिफोर दैट, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट इट. तो क्लोरोफिल जो है नेचर से, यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है, वाटर ऑब्टेन करता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसमें आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द ग्रीन पिगमेंट सनलाइट के प्रेजेंस में इट प्रोड्यूस C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज मीन शुगर. तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, शुगर जो है अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, एंड दैट इज द रीजन कि जितने भी हम लोग स्पोर्ट्समैन को देखो, बराबर है, ये लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ऑन द स्पॉट एनर्जी देने वाला है, तुरंत ही, बराबर है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट एनर्जी देने वाला है. एंड इसलिए आप लोगों ने मार्क किया होगा, जब भी जो है कोई आदमी डॉक्टर के पास बीमार हो गया आता है, और डॉक्टर पहले सलाइन मार दो भाई, इसको पहले ग्लूकोज का ही उसको जो है चढ़ाया जाता है. व्हाई? बिकॉज इट गिव द एनर्जी. ओके, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सो इट प्रोड्यूस द ग्लूकोज. और उस ग्लूकोज का कंजम्पशन वो खुद तो करता ही करता है, बट एट द सेम टाइम वो दूसरों की भी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है. विद दैट इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हिच इज यूजफुल फॉर अस. Okay, and next is H2O water in the form of vapor. Like that way, the process of autotrophic nutrition, the process of photosynthesis is over. Okay, वो रह गया था, that's why I completed there. So again, in heterotrophic nutrition, this four things: carnivorous, herbivorous, omnivorous, and holozoic. It is the mode. ये तरीके हैं heterotrophic के. तो first is the carnivorous, depend on grass. जितने भी ऑर्गेनिजम्स घास खाने वाले हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, शाकाहारी. एंड दोज हु आर डिपेंड ऑन फ्लैश, मीट, दे आर कार्निवोरस. ओके, एंड दोज हु ईट बोथ ग्रास एंड मांस, ओके, दे आर ओमनिवोरस. ओके, and last one, holozoic, microorganisms like amoeba, specific way they intake their food, and their nutrition is the holozoic nutrition. Is it clear? So in carnivorous category, all the animals like lion, hyena, tiger, cheetah, that all you can keep in this. Herbivorous, human being. Okay, sorry, not human being, my mistake. Sorry, in herbivorous, cow is there, deer is there, elephant is there, horse is there. It all are included in herbivorous. Next, omnivorous, those who eat both grass and mass like human being. We include in omnivorous. लेकिन सोचना, क्या हम सच में omnivorous हैं? बराबर, ये सोचने वाली बात है. अभी मैं क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा. ओके, ओमनिवोरस, ठीक है. इवन कॉकरोच ओमनिवोरस. बियर, भालू, वो मध भी खाता है, शहद भी खाता है, मछली भी खाता है, ओमनिवोरस. एंड वॉट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम and other microorganisms, they all are do the holozoic nutrition. And like this way, the part of nutrition
we complete, but the nutrition in plant and nutrition in animal, these are two independent subject in nutrition that we will see in next video. Is it clear? लेकिन उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए रख दिया था, इज ह्यूमन बीइंग इज रियल सेंस ऑमनिवर्स, बराबर है? बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस में बेसिकली कुछ डिफरेंस है। हम लोग बहुत सारे ह्यूमन बीइंग नॉनवेज खाते हैं, बराबर है, और हम इस कैटेगरी में रखे जाते हैं ऑमनिवोरस की, लेकिन रियल सेंस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नॉनवेज खाने का है ही नहीं है। वी आर द प्योर हर्बीवोरस एनिमल क्रीचर। मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दे सकता हूँ। किसी भी काऊ को और किसी भी बिल्ली को दूध पीते हुए या फिर पानी पीते हुए देखना, तो काऊ कैसे पानी पीते, सक करके पानी पीती है। बिल्ली कैसे पानी पिएगी, इसे चाट के पानी पिएगी, बराबर है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, चाट के पानी पीता है या सक करके पानी पीता है? वन सेकंड, जितने भी कार्निवोरस हैं उनके कैनाइन टीथ, ये जो साइड के, जिसको हम लोग गुजराती में राक्षसी दांत बोलते हैं, वो कैनाइन टीथ जो है वो बड़े बड़े, क्योंकि उनको मांस को फाड़ना पड़ता है। ओके, एंड हमको वो कैनाइन टीथ इतने बड़े नहीं है कि हमको मांस को फाड़ने की जरूरत पड़े। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप डाइजेशन में जाओगे ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पे कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो कार्निवोरस की कैटेगरी में नहीं आता है। कार्निवोरस का इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, क्योंकि उनको मांस पचाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, घास पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारा इंटेस्टाइन 5 to 7 फीट बड़ा है। सबसे बड़ा इंटेस्टाइन खरगोश का होता है, रैबिट का होता है। इज प्योर हर्बीवोरस। ओके, तो हमारा भी इंटेस्टाइन बड़ा है। सो बाय दैट वे दिस फीचर्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जो है हर्बीवोरस की कैटेगरी में लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बिगाड़ लिया है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कम इन द प्रॉपर ट्रैक। वो आना बहुत ज़रूरी है, हमको ये सोचना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी टाइम आई सेड कि लेसन पढ़ लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बन जाना है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी नॉलेजेबल। व्हाट इज एग्जैक्ट फॉर यू, दैट इज ऑल्सो यू शुड अंडरस्टूड। अगर वो समझ में आता है तो हमको ये पढ़ना, एक ज्ञान लेना कोई मतलब है, बाकी कोई मतलब रहता नहीं है। सो हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस, एंड आफ्टर दिस, इसके बाद में जब हम लोग मिलेंगे, so at that time we will talk about the nutrition in plant and nutrition in human being. Okay, bye, see you.